vegetative growth of the plant gets over, then afterwards flowers are produced and sexual reproduction starts. Okay, now here, what is flower? I will just revise that whatever we have studied last year. Flower is a modified and condensed shoot. Condensed shoot इसका मतलब है distance between two nodes is very much reduced. But you all know that a typical flower is having four whorls, that is calyx, corolla, androecium and gynoecium. In this chapter, we are not concerned with calyx and corolla. So we will talk about androecium and gynoecium. Androecium, it is a male reproductive part of the flower. But before that, let me tell you one MCQ. As you know that there are four whorls, calyx, corolla, androecium and gynoecium. You can imagine this is calyx, then corolla, androecium and gynoecium. And you know flower is a modified shoot, modified stem. And you know the stem is divided into nodes and internodes. Or what is node? Node is a portion where the leaf is attached. अभी ये फ्लावर क्या है? फ्लावर इज अ मॉडिफाइड स्टेम. इसका मतलब है सेपल्स, पेटल्स, स्टैमेन्स एंड कार्पेल्स. Calyx is made up of sepals, corolla is made up of petals, androecium is made up of stamens, and gynoecium is made up of carpels. So all these four, that is sepals, petals, stamens and carpels, are modified leaves, modified for sexual reproduction. इसका मतलब है a typical flower is having four nodes, and you know this is internode. The distance between two successive nodes is called as internode. इसका मतलब है 1, 2 and 3 internodes are present here. Clear? So write down one MCQ which can be asked to you in board exam or maybe NEET or CET. So आप उसमें लिख दो MCQ और number 1 लिखो a typical flower. I will go slow so that you will be able to write. I hope you are having pen and notebook with you. So I will start. A typical flower has, or maybe has के बदले consist आएगा. A typical flower consists of 4 nodes. 4 को underline करो. 4 nodes and 3 internodes. 3 को अंडरलाइन करो. 4 and 3. अभी ऑप्शन में अलग अलग लिखेंगे कुछ भी. 3 4 4 4 4 5 anything they may write, but our answer is a flower consists of 4 nodes and 3 internodes. ये याद रखो, बुक में नहीं दिया है, but it is asked in the exam. So remember that, and if you are not written, still time is there. पेन हाथ में ले लो, नोटबुक ले लो. सी एज यूजुअल फॉर 12th स्टैंडर्ड, साइड बाय साइड आई टेल द एमसीक्यूज एंड 1 मार्क क्वेश्चन, क्योंकि स्टूडेंट्स के मार्क्स कहाँ पे कम होते हैं? एमसीक्यू और 1 मार्क में, ये मुझे पता है. बाकी लॉन्ग आंसर यू कैन राइट, लेकिन एमसीक्यू और 1 मार्क क्वेश्चन में आंसर इन 1 सेंटेंस वो ही आंसर देना चाहिए. यू शुड बी परफेक्ट. सो वहां पे अपने मार्क्स जाते हैं, तो वो क्वेश्चंस में साइड बाय साइड देने वाली हूँ. एंड ऑफ कोर्स आफ्टर ईच लेक्चर और मे बी आफ्टर 1 चैप्टर आई विल गिव यू ऑल 1 मार्क क्वेश्चन. तो ये आपने लिख के लिया है, ऐसे मैं समझती हूँ. A typical flower consists of 4 nodes and 3 internodes. Now we will start with androecium. Androecium, it is a male reproductive part of the flower, and it consists of stamens or microsporophyll. Microsporophyll word may not be there, but it is asked in CET, NEET or maybe board exam. And you know what is stamen? I will just revise that. We have done it last year, but I will state the diagram of a stamen. I will write androecium also. Androecium, it is a male reproductive part. It is male reproductive part of flower. It consists of stamens
or a microsporophyll. Okay, this is asked in exam. Whatever I underline, it is MCQ question. Now, typical stamen, I will sketch the diagram. See here, this is the diagram of a stamen. This is filament. These are anther. Anther consists of 2 anther lobes. And here, this is the connective. Maybe question will be asked to you for 2 marks. Describe the structure of a stamen with the help of neat label diagram. So, you can sketch the diagram. I will give you 2 minutes. And within 2 minutes, you can write this and you can sketch the diagram also, simple diagram. So, sketch it and write down that. And then I will start explanation. हो गया तो कोई भी एक दो स्टूडेंट मुझे बोलेंगे ना कि yes we have finished, I will start. So sketch the diagram for stamen and write there 2 marks question. I hope you can see the diagram. So I hope you have finished the diagram. So I will start. Yes, ma'am, completely. Here, now the stamen, you can see the diagram. It consists of 3 parts. तो देखो 3 parts है तो आधा 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 मार्क्स, तो 1.5 मार्क हो गया और आधा मार्क डायग्राम को. लेकिन वो आधा मार्क आपको कब मिलेगा? यू विल हैव टू राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. तो अभी मैं स्ट्रक्चर एक लाइन में, फंक्शन एक लाइन में एक्सप्लेन करूंगी. तो आपको 2 लाइन हर एक के लिए लिखना पड़ेगा. See, filament, it is a stalk-like structure. Means ये description हो गया. And it takes the anther up in the flower. That is the function. It takes the anther up in the flower. Anther, it consists of 2 anther lobes. You can see the diagram. 2 anther lobes are there. And when 2 anther lobes are there, we call it as bithecus or dithecus. Bi or di means 2. So the anther is bithecus or dithecus and it contains 4 pollen sacs. So it is tetrasporangiate. In the next diagram which I am going to sketch, I will write there or I will show you how 4 pollen sacs are there. So anther consists of 2 anther lobes. It is bithecus and tetrasporangiate. And what is the function? Function of this is, function is to produce the pollen grains. Then third part is connective. Connective is a parenchymatous tissue and it joins the 2 anther lobes. So हो गया description. Again I will repeat. Typical stamen consists of 3 parts, that is filament, anther and connective. Filament is the stalk, it takes the anther up in the flower. Anther consists of 2 anther lobes, so it is dithecus and tetrasporangiate. It produces pollen sacs. Inside the pollen sac, pollen grains are present. Connective is a parenchymatous tissue, it joins the 2 anther lobes. Now for us, TS of the anther is there. And this TS of anther is more important. This question is asked to you for 3 or 5 marks.
or 3 or 4 marks. So I will sketch the diagram of TS of Antarlope, or I think in the book the diagram is nicely given. So if I don't sketch the diagram, but I will sketch the diagram so that you will come to know how to sketch it in the exam. क्योंकि बुक में जो दिया है ना उससे थोड़ा अलग ढंग से हम लोगों को डायग्राम करना है एग्जाम में. So I will sketch the diagram of TS of Anther, and you also sketch with me. TS of Anther. पूरा डायग्राम करने की जरूरत नहीं, एक पार्ट करेंगे तो भी बहुत है, क्योंकि पूरा डायग्राम एग्जाम में कंप्लीट होगा ही नहीं. सो आउटलाइन तो पूरी करनी है और बाद में थोड़ा ही पार्ट डिटेल में दिखाना है, बस हो गया. See, like this it is not shown in the book, so I am showing it how it is described. The one which I am sketching now, they are slightly elongated cells. Okay. Then pollen sac, here one, here also one, and here. Then इसमें भी वही पूरे तो नहीं करेंगे डायग्राम, because it will take time. In the exam also you will not complete the diagram because it takes lot of time, and 2 marks generally for the diagram and 2 marks for description. Or maybe sometimes they give you 1.5 mark for diagram and 1.5 mark for ये पूरा भर देना है हम लोगों को पैरेन्किमा सेल से. So I will label now. This is epidermis, outermost layer. Then this one, second one, the inner to that. This is called as endothecium. Then these are middle layers. The red color one here, this one is tapetum. I have done one mistake. Tapetum I will show with red color only, so that it will be very clear to you. This is tapetum. And then inside that, sporogenous cells. Here I will write, this is pollen sac or microsporangium. And these are pollen grains. Pollen grains, which are also called as microspores. I hope you can see the diagram. So sketch the diagram. I will slightly shift the board to this side so that you can see everything. I think you can see the board now. Sketch the diagram, and when you will complete, tell me. The name of the diagram is TS of Anther. This diagram is asked to you only for sketch and label also. Sketch and label 2 or 3 marks question. क्योंकि 1-2 क्वेश्चन सिर्फ डायग्राम के भी पूछते हैं एग्जाम में.
तो सिर्फ डायग्राम भी पूछेंगे, 2 नहीं तो 3 मार्क के लिए, और मे बी along with diagram description will be asked to you for 4 marks. पूरा डायग्राम करने की जरूरत नहीं है, मैंने जैसे स्केच किया वैसे ही करो ना तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे. मैम डायग्राम की साइज क्या होगी? डायग्राम की साइज देखो, अपना लॉन्ग बुक है ना, अपना पेपर आता है ना, उसमें 4-5 लाइन तो आना चाहिए, इतना बड़ा चाहिए. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. 4-5 लाइन यानी कितना बड़ा होगा. बहुत छोटा डायग्राम नहीं करो, नहीं तो माइक्रोस्कोप लगेगा टीचर को देखने के लिए. ओके मैम. So sketch the diagram and then tell me so I can start. Or all labels should be only on one side as far as possible. कभी कभी बहुत लेबल से तो एक बाजू में नहीं आते, फिर 2 बाजू यूज करना, अदरवाइज ओनली ऑन वन साइड. और जहां डायग्राम करोगे उसके बाजू में नोट नहीं लिखना है, नीचे लिखो नहीं तो ऊपर लिखो. Write there if you want for your reference only diagram 2 or 3 marks question along with description 4 marks question. And the label should be of diagram should be of appropriate size and minimum 3 or 4 correct label should be there. हम लोगों ने यहाँ 7 लेबल किए हैं, 4 तो आपको करना ही चाहिए एंड दैट ऑल्सो करेक्टली लेबल. इफ यू आर गोइंग टू अपियर फॉर नीट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो उसमें ये डायग्राम आएगा और लेबल नहीं लिखेंगे, 1 2 3 4 लिखेंगे और नीचे 1 2 3 4 क्या है वो ऑप्शन दे देंगे. यू हैव टू फाइंड आउट करेक्ट ऑप्शन. नीट में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं. So I will wait for 2 minutes, then I will start. मैम वो एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस में वो एपी और हाइपो क्या रहता है? किसमें हाइपो और क्या पूछ रहे हैं? एपिडर्मिस और वो हाइपोडर्मिस में एपी और हाइपो का मतलब क्या होता है? एपी का मतलब है आउटर. एपीडर्मिस, एपी मींस आउटर, डर्मिस मींस स्किन. हाइपो मींस एपी के नीचे है ना, हाइपो मींस बिलो. तो एपिडर्मिस के नीचे जो है वो हाइपोडर्मिस. और हम लोगों ने लास्ट ईयर एनाटॉमी किया था, उसमें एंडोडर्मिस ऐसा भी वर्ड है. एंडो मींस इनर, डर्मिस मींस स्किन. तो फिर मैम वो इंडो दोनों के बीच में आएगा? कौन कौन बीच में आएगा? इंडो. एंडो ना, इसमें तो एंडोडर्मिस नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर हम लोगों ने रूट और स्टेम किया था. नहीं, ये साल भी प्लांट वाटर रिलेशन में एंडोडर्मिस वर्ड है. एंडोडर्मिस का अंदर रहता है, वैस्कुलर बंडल के बाहर. याद है कुछ वैस्कुलर बंडल वगैरह या भूल गए? मिस याद है थोड़ा. तो वैस्कुलर बंडल के बाहर जो रहता है ना वो एंडोडर्मिस है. अपने ये डायग्राम में नहीं रहेगा, रूट और स्टेम में एंडोडर्मिस रहता है. ओके मिस, थैंक यू. So I will start now. If you have finished, all of you. डायग्राम में क्यों करने को बोलती हूँ कि आपको याद रहेगा कि ये डायग्राम पेपर में पूछते हैं, क्योंकि डायग्राम की प्रैक्टिस आपको करना चाहिए ना बाद में घर में. अभी तो फटाफट नहीं कर सकेंगे, लेकिन बाद में करो प्रैक्टिस.
So now I will start. See here, one thing I have forgotten. Here you have to show connective. This part, it is connective. हम लोगों ने टीएस ऑफ सिर्फ स्टैमिन में कनेक्टिव देखा था ना, तो ये देखो, ये अभी टीएस ऑफ आंसर लिया है, तो ये साइड वाला एक आंसर लो, ये साइड वाला एक आंसर लो, तो कितने आंसर लोग जाए? 2. दैट इज व्हाई इट इज डाइथिकस और बाइथिकस. और देखो एक आंसर लोब में 2 पोलन सैक्स है, सो टोटल पोलन सैक्स आर 4. So pollen sac is also called as microsporangium. Okay, you know, now you will say what is microspore, madam? Last year देखो हम लोगों ने किंगडम प्लांटी में किया था कि जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस. हेटेरोस्पोरस का मतलब है उसमें 2 टाइप के स्पोर्स है. कौन से 2 टाइप? माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर. माइक्रोस्पोर है ना, वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उससे मेल गैमिट बनते हैं बाद में. और मेगास्पोर है ना, उससे फीमेल गैमिटोफाइट और फीमेल गैमिट बनता है बाद में. सो 2 types of spores are there. So angiosperm plants are heterosporous. हेटेरोस्पोरी का मतलब है 2 टाइप के स्पोर्स. ये वर्ड शायद अपने बुक में नहीं यूज किया होगा, लेकिन आप सीईटी में तो नीट को अपीयर होने वाले हो, तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा दैट एंजियोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस. और हेटेरोस्पोरी का मतलब है 2 टाइप्स ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस. ये 11 में किया है, इसलिए 12th में दिया नहीं है, तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन नीट ने तो सीईटी में पूछेंगे, बोर्ड में शायद नहीं आएगा. लेकिन यू रिमेंबर दैट इट इज हेटेरोस्पोरस. 2 types of spores are there, microspores and megaspore. And that is why stamen is called as microsporophyll and the pollen sac is called as microsporangium. Now here, if you see immature anther, immature means ऐसा डायग्राम नहीं हुआ है, तब क्या होगा? It will be having only epidermis and some parenchyma cells. बाद में epidermis के नीचे archaeosporial cells are formed. And these archaeosporial cells afterward develop into sporogenous cells and these wall of the anther. Okay, लेकिन इतना डिटेल में आप नहीं लिखोगे ना बोर्ड में तो भी चलता है. So directly archaeosporial cells, sporogenous cells इतना डिटेल में नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि मार्क्स सिर्फ 2 है. डिस्क्रिप्शन को 2 मार्क्स, नहीं तो 2.5 marks, and diagram को 2 और 1.5 marks. See, the model answer will change every year. Maybe chief moderator will think that diagram को सिर्फ 1.5 mark देके 2.5 mark description को दे देंगे. नहीं तो कोई chief moderator सोचेगा कि 2 mark diagram के लिए 2 mark description के लिए काफी है. So it depends. So if you don't write in too much detail, it will do. So we will start here. You will say TS of anther. The anther is consisting of 2 anther lobes, so it is a bithecus or dithecus and tetrasporangiate. ये देखो 4 माइक्रोस्पोरेंडिया है. This is asked for MCQ also. पूछते हैं anther is having dash anther lobes and dash, or only like this, anther is dash छोड़ देंगे और अलग अलग ऑप्शंस हो गए. मोनोथीकस, मोनोस्पोरेंडिएट, मोनोथीकस, बायस्पोरेंडिएट. मोनोथीकस का मतलब है एक ही एंथर लोब. मोनोस्पोरेंडिएट मींस एक ही माइक्रोस्पोरेंडिया. मोनोथीकस बायस्पोरेंडिएट मींस एक ही एंथर लोब और 2 माइक्रोस्पोरेंडिया. मे बी डाइथीकस बायस्पोरेंडिएट and dithecus tetrasporangiate. Our answer is it is a dithecus, नहीं तो bithecus and tetrasporangiate. That is our answer. Okay. Now here it is having wall of the anther and 4 pollen sacs. The wall of the anther from outside to inside. Outermost layer is epidermis. You can see the outermost layer. Epi का मतलब है outer, dermis का मतलब है skin. It is only 1 layer in thickness. You can see consisting of flat cells, brick-like cells. So, and it is for protection. Inside this, you will get slightly elongated cells.
I've shown slightly elongated cells called as endothecium. And this endothecium is having fibrous thickening and it helps in dehiscence of the anther lobe. Dehiscence का मतलब है breaking of the anther. ये जो pollen grains यहाँ पे तैयार होते हैं वो बाहर निकलना चाहिए ना, नहीं तो pollination कैसे होगा? You know, pollination means pollen grains are carried from the anther to the stigma. तो यहाँ से बाहर निकालना चाहिए pollen grain को, तो कैसे निकलेंगे? This endothecium, it is hygroscopic. It is having fibrous thickening. It is very sensitive to humidity. So when the conditions are dry, यहाँ पे breaking होगा, and these pollen grains will be liberated out. That diagram is shown in our book 1.4b. वो मैंने sketch नहीं किया है, वो आप बाद में देखो. So inside the epidermis or below the epidermis, endothecium is there, which consists of slightly elongated cells, and they are having fibrous thickenings, and endothecium is responsible for dehiscence of the anther. Below that, you will get 2 to 3 layers thick middle layers that is made up of parenchyma, and then the innermost layer, which I have shown here as well as here, it is tapetum. Tapetum is very, very important. It is asked to you for 1 mark or for MCQ. Tapetum is the innermost layer of the wall of the anther. It is lining the pollen sac. The cells are polyploid. Polyploid means having many sets of chromosome. And these tapetum, the cells are very important because they provide nourishment to the developing pollen grains. Not only that, the tapetum secretes sporopollenin. Sporopollenin बाद में हम लोग देखेंगे अपने बुक में, तो यहाँ पे लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर में sporopollenin वर्ड यूज किया है. Sporopollenin is the hardest substance in living world. Sporopollenin is the hardest structure in the living world, and it is produced from the tapetum, and that is why protection is given to the pollen grain. Okay, so now that is tapetum. So the wall of the anther consists of 4 layers. Outermost is epidermis. It is 1 cell in thickness, consisting of flat cells. Below that, you will get endothecium, which consists of elongated cells. They are having fibrous thickening, and the function is for dehiscence, for breaking open of the anther. Below that, you will get 2 to 3 layers thick middle layers, and the innermost layer is tapetum. The tapetum cells are polyploid in nature, having many sets of chromosome, and they provide nourishment to the developing pollen grain. Not only that, tapetum secretes sporopollenin, which forms the exine, the outer wall of the pollen grain. Then inside that, you will get sporogenous cells. These sporogenous cells are diploid. Diploid means having 2 sets of chromosome. And then these sporogenous cells undergo meiosis. Meiosis आपको पता है, reductional division. And pollen grains are formed or microspores are formed. So here pollen grain is haploid. क्योंकि pollen grain haploid क्यों है? Because these pollen mother cells are written here sporogenous cells. We can write here pollen mother cell also. The pollen mother cells or microspore mother cells are diploid in nature. They undergo meiosis and give rise to pollen grains or microspore. Meiosis होता है, इसलिए microspore कैसे है? Microspores are haploid in nature. So that is how from the sporophytic generation, the gametophyte generation has started. Last year हम लोगों ने alternation of generation किया था, याद होगा तो, kingdom planting में. To complete the life cycle of any plant, 2 generations are there, and they are sporophyte and gametophyte. Sporophyte is always diploid, and it reproduces by formation of spores, and the spores are produced by meiosis. So the spores which are there, they are haploid, and then the spores will germinate and will give rise to gametophyte. और बाद में gametophyte gamete produce करेंगे, gametes will fuse, zygote will be formed, and again sporophytic generation will start.
तो अभी यहाँ पे sporophytic generation is over. I said that the pollen grains are formed, microspores are formed. So microspore or pollen grain is haploid. So it is the starting point of gametophytic generation. So pollen grain is the first cell of male gametophyte. Okay. So now I will start with structure of pollen grain. Any doubt here? If you don't have doubt, take 2 sentences. आप कुछ भी लिखो, एमसीक्यू लिखो, नहीं तो आंसर इन 1 सेंटेंस लिखो, कुछ भी. 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और 1 मार्क क्वेश्चन के लिए, तो वो पॉइंट्स लिख के ले लो सिर्फ. बाद में मैं क्वेश्चन तो दे दूंगी. सो फर्स्ट पॉइंट इज एंथर इज बाइथिकस. अपने बुक में क्या लिखा है वो देखती हूँ, बाय या डाई. डाई लिखा है, डाइथिकस. एंथर इज डाइथिकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट. डाइथिकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट. डाइथिकस और टेट्रास्पोरेंजिएट को अंडरलाइन करो. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, टैपेटम. टैपेटम को अंडरलाइन करो. टैपेटम इज the innermost layer of wall of the anther. फिर से रिपीट करती हूँ, टैपेटम को अंडरलाइन करो. टैपेटम इज द innermost layer of wall of anther. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पोलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर. पोलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर is first cell of male gametophyte. First cell of male gametophyte. Okay, so now I will explain you structure of pollen grain or microspore with the help of diagram. Structure of pollen grain, 2 मार्क का क्वेश्चन. पोलन ग्रेन का दूसरा नाम माइक्रोस्पोर है, तो वो भी लिख के रखो. डायग्राम आई विल स्केच. चाहिए तो स्पाइन दिखा सकते हैं उसके ऊपर. outer wall is exine, inner wall is intine. Both of them together we called it as sporoderm. This is germ pore. Nucleus is there. And surrounding this you will get cytoplasm. So sketch the diagram. ये डायग्राम अभी 4 लाइन वाला नहीं चाहिए, छोटा करो डायग्राम ये थोड़ा. मैम ये साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म एक ही होता है? साइटोप्लाज्म है. साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म both are same. 1 minute. Protoplasm is cell without cell wall. प्रोटोप्लाज्म कभी बोलते हैं हम लोग, सेल विदाउट सेल वॉल, वी कॉल्ड इट एज प्रोटोप्लाज्म. नहीं तो साइटोप्लाज्म वर्ड यूज करते. यहाँ पे सेल वॉल है ना, तो यहाँ साइटोप्लाज्म बोलेंगे. प्रोटोप्लाज्म इज सेल विदाउट सेल वॉल. ओके मैम.
पोलन ग्रेन, सिर्फ पोलन ग्रेन 2 मार्क के लिए पूछते, डायग्राम एंड डिस्क्रिप्शन. देखो डायग्राम इतना सा है, आधा मार्क डायग्राम को, नहीं तो 1 मार्क डायग्राम 1 मार्क डिस्क्रिप्शन, कभी कभी आधा मार्क डायग्राम 1.5 मार्क फॉर डिस्क्रिप्शन. सिंपल क्वेश्चन. ये साल तो मुझे लगता है पेपर इजी होगा क्योंकि लॉकडाउन है, कोरोना है, क्या पता अभी. So I think you must have completed. So I will start explanation. The pollen grain is unicellular uninucleate structure. एक ही सेल है और एक ही न्यूक्लियस है. So pollen grain is unicellular uninucleate structure. It is having 2 wall. Wall is called as sporoderm. Derm का मतलब dermis और dermis means skin, you know. और ये dermis किसकी है? स्पोर की है, इसलिए स्पोरोडर्म. It is having 2 layers. Outer one is exine, inner one is intine. Exine consists of sporopollenin, which is the hardest substance in the biological world, and it protects the pollen grain. Sporopollenin is secreted by the tapetum, and it will protect the pollen grain from chemicals. That means from degradation. And that is why you know that we get the pollen grains in fossil form. देखो next page पे I will tell you on page number 4. On page number 4 कहीं तो ये क्वेश्चन पूछा है, नहीं why page number 4, page number 3 में ही why pollen grains can remain well preserved as fossils, ऐसा क्वेश्चन पूछा है. उसका आंसर क्या है? Why pollen grains are preserved, well preserved as fossils? It is because of sporopollenin. Sporopollenin is the hardest substance in living world, and it protects the pollen grain from chemicals, from biodegradation. Decomposition नहीं होता है pollen grain का, and that is why they are preserved there as fossils. तो इसका आंसर फाइंड आउट का आंसर मैंने दे दिया. फाइंड आउट का आंसर भी आप याद रखो. मे बी इट इज आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम. एंड वन मोर वर्ड नॉट गिवन इन अवर बुक, बट इफ एनीबडी वांट्स टू अपीयर फॉर सीईटी और नीट, मैं यहाँ वर्ड लिख के रखती हूँ, वो लिख के ले लो. जिनको नहीं अपीयर होना है वो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा. पैलिनोलॉजी, PALNOLOGY, पैलिनोलॉजी. पैलिनोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन. पैलिनोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स. ओके, सो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, आई वाज टॉकिंग अबाउट एक्साइन. Exine is the outer layer. It consists of sporopollenin, and inner layer is intine. Intine is delicate, made up of cellulose and pectic compounds. And here, at certain places, you can see I have shown 4. 1, 2, 3, and 4, where exine is absent. Intine is continuous, but exine is absent in certain areas, and these areas are called as germ pores. For dicot pollen grain, 3 or 4 germ pores are there. I have shown 4 germ pores, 1, 2, 3, and 4. डाइकॉट के पोलन ग्रेन में 3 नहीं तो 4 जर्म पोर्स होते हैं, और मोनोकॉट के पोलन ग्रेन में 1 ही होता है. अपने बुक में नहीं दिया है, सिर्फ याद रखो. जिसको याद रखना है रखो, लिख के रखना है तो लिख के रखो. Dicot pollen grain is having 3 or 4 germ pores, and monocot pollen grains are having only 1 germ pore. It is uniporate. Okay. Now here, inside that you will get one prominent nucleus surrounded by dense cytoplasm. So that is the structure of pollen grain. Again I will repeat. Suppose I am writing in the paper, what I will write? The pollen grain is the first cell of male gametophyte.
It is unicellular, uninucleate. It is having the wall which consists of two layers. Outer is called as exine. It consists of sporopollenin. It is the hardest substance. Due to that, protection is given to the pollen grain from biodegradation. It is not continuous. While the inner layer is intine, it is delicate. It consists of cellulose and pectic compounds. Wherever exine is absent, that part is called as germ pore, and there are 3 or 4 germ pores in dicot plants. Inside that, one nucleus is there, surrounded by dense cytoplasm. So that is the structure of microspore. And you know, at the time of pollination आपको पता है, transfer of pollen grains from the anthers to the stigma. Pollen grain जब स्टिग्मा पे गिरते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन. और पॉलिनेशन के लिए डिफरेंट एजेंट्स है, मे बी विंड, वाटर, इंसेक्ट, birds, anything. So here, at the time of pollination, generally the pollen grain is two-celled. And which are the two cells we will study, but remember that. So that is all for structure of pollen grain. Now imagine करो ये pollen grain गिर गया है स्टिग्मा पे, तो अभी क्या होगा? Development of male gametophyte. So the next topic is development of male gametophyte. उसके लिए टोटल 4 डायग्राम है, उसमें से एक डायग्राम तो यही है पोलन ग्रेन का. तो आपको ये डायग्राम अभी नहीं करना पड़ेगा. I will sketch but you don't sketch. Remaining 3 diagrams I will sketch and I will explain you development of male gametophyte. मैम ये इसके मार्क्स कितने रहेंगे? हाँ, मार्क्स कितने रहेंगे इसके मेल गैमेटोफाइट के? डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट 4 मार्क का क्वेश्चन, 2 मार्क डायग्राम, 2 मार्क डिस्क्रिप्शन. अभी मुझे आप बोलो कि मैं डायग्राम करूं या बुक में से एक्सप्लेन करूं. देखो बुक में फिगर 1.5 डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, वेरी नाइस डायग्राम्स आर देयर. सो इफ आई explain from here it will do. So I think I will explain from here only, so that at least this much will be over today. So we will start with development of male gametophyte. सबके पास बुक है? Yes, बुक होगा तो पेज नंबर 4 ओपन करो. Page number 4, diagram is 1.5. So I will explain from the book only. लेकिन याद रखो ये डायग्राम आपको करना है, 2 मार्क के लिए डायग्राम रहता है. So you can see the first diagram is the same which I have sketched pollen grain. Now here in the beginning, this nucleus which is present in the pollen grain, we can divide this answer in 2 parts, before pollination and after pollination. Before pollination क्या होता है वो मैं पहले explain करती हूँ. Before pollination, this nucleus which is present in the pollen grain divides by mitosis. Important word है, mitosis लिखना है. And 2 cells are formed. The bigger one is vegetative cell, which is large one, and the smaller one is called as generative cell. Bigger one is vegetative cell, smaller one is generative cell. The vegetative cell is having large amount of food material and irregular shaped nucleus is present there. At this 2-cell condition, the pollen grains are liberated out and they fall on the stigma. So at the 2-cell condition, the pollen grains fall on the stigma. Now when they fall on the stigma, stigma is sticky. So the pollen grain remain attached and stigma secretes sugary substance, due to which nourishment is given to the pollen grain. As a result, pollen grain germinates and pollen tube is formed. So in the beginning, the pollen tube is very small. See, that diagram is not shown here. So after A, B, C, after third diagram, after C,
I will sketch which diagram. I will sketch that and I will explain you. After see, the diagram which I will sketch is like this. So diagram number D. आप ये डायग्राम स्केच करके ले लो. एंड ई, अपने बुक में डायग्राम नहीं दिया है, अलग ढंग से दिया है, but according to me this diagram is more correct which I am sketching. करो डायग्राम नंबर डी एंड ई. अकॉर्डिंग टू मी सी डायग्राम भी नहीं किया तो चलेगा. ए और बी करो और बाद में ये दो. 4 डायग्राम बस है. डायग्राम हो गए तो बोल देना मुझे, ये दो एक्सप्लेन करना ही है आज. हाँ, उसके पहले हम रुकेंगे नहीं. So shall I start? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Complete. मेल गैमेटोफाइट. पहला डायग्राम पोलन ग्रेन का है, वो एक्सप्लेन कर दिया. बाद में हम लोगों ने सेकंड डायग्राम देखा कि दैट न्यूक्लियस व्हिच इज देयर इन द पोलन ग्रेन डिवाइड्स बाय माइटोसिस. 2 cells are formed. The smaller cell is generative cell, larger one is tube cell, and the tube cell contains food material. Then afterward, at this 2 cell condition, the pollen grain falls on the stigma. Stigma is sticky. It secretes sugary substance. So nourishment is given to the pollen grain, and as a result, pollen grain germinates. Pollen grain germinates means at any point of the germ pore, the intine will come out in the form of a pollen tube. ये डायग्राम देखो, मैंने D वाला लिखा है, उसको आप C भी बोल सकते हैं. आपने पहले 2 डायग्राम किए और थर्ड वन किया ही नहीं है तो भी चलेगा. Then this diagram, that the pollen tube will come out, the intine will come out in the form of pollen tube or germ tube from any point of the germ pore, and then the entire content of the pollen grain, यानी कि tube nucleus, cytoplasm and generative cell will enter into the pollen tube. Slowly the pollen tube will develop. It will grow through the style. आपको पता है कैसा होता है कार्पेल, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा, और ये हो रहा है स्टिग्मा पे. तो नाउ पोलन ट्यूब विल डेवलप. ये देखो कार्पेल कैसे है, ऐसी है. ओवरी इज देयर, दिस इज द स्टाइल एंड दिस इज द स्टिग्मा. तो ये यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे ओव्यूल है, यहाँ पे ऐसे ओव्यूल है, यहाँ पे फीमेल गैमेट है. तो यहाँ तक मेल गैमेट को आना है. ये डेवलपमेंट इधर हो रही है स्टिग्मा पे. So this pollen tube will travel through the entire style. That means this will grow in length, and the tip of the pollen tube will secrete some enzymes, due to which the tissue of the style will get destroyed. क्योंकि style तो hollow नहीं है,
style में tissues है. So those tissues will get destroyed because of the enzyme secreted by the tip of the pollen tube. And this pollen tube will grow till what? Till it passes through the entire style and reaches up to this ovule. Okay. And in the meantime, the tube nucleus will get destroyed. It is not having any function. And the generative cell will divide by mitosis and two non-motile male gametes are formed. Clear? Generative cell will divide by mitosis and two non-motile male gametes are formed. And these two non-motile male gametes along with this pollen tube, that means 3 cells are there. So this is the mature male gametophyte. Mature male gametophyte of angiosperm is 3 cells only. Which are the 3 cells? 2 non-motile male gametes. ये 2 cell हो गए और ये pollen tube तीसरी cell. So mature male gametophyte of angiosperm is 3 cell. Clear? So up to here we have finished. So development of male gametophyte, one topic is over today. आपको चाहिए तो ये 2 lines लिख के ले लो, बाद में हम stop करेंगे. What you will write? You will write at the time of pollination. ये सब MCQ के questions हैं, नहीं तो 1 mark के हैं. I am giving you directly answer. Question में बाद में दे देंगे. लिख के ले लो. At the time of pollination, pollen grain shows 2 cells. Pollen grain shows 2 cells. Next point लिखो. Mature male gametophyte. Mature male gametophyte of angiosperm. Mature male gametophyte of angiosperm consists of 3 cells. Consists of 3 cells. और एक पॉइंट लिख के ले लो. स्पोरोपोलिनिन. Sporopollenin is hardest substance in living world. Okay, so this part is over. Next time we will study gynoecium and development of female gametophyte. I hope you have followed this much. So only 1 or 1.5 page I have explained. So you can read this at home. If you are having any doubt, you can